unknown resistance using Wheatstone's meter bridge. Okay, let's understand the principle. What is the principle? It works on the principle of Wheatstone network. What is Wheatstone network का principle? Wheatstone network says that कि अगर अपने चार रेजिस्टेंस है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है और बीच में गैल्वेनोमीटर है और अपना गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है तो अपना नेटवर्क बैलेंस है, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. करेक्ट? याद आ रहा है कुछ? Yes. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. इतना लिख दिया, वेल एंड गुड. कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं. ओके, सो व्हाट डू वी हैव इन कंस्ट्रक्शन? वी हैव let me draw wire. Okay, perfect. So this is my wire, dear students, which will be connected to what? A cell, some internal resistance, a key, and what? A rheostat. सब में basic idea यही आ रहा है, dear students. Okay. AB is my wire. AB is 1 meter long wire. XY is my 1 meter long meter scale. दिखा रहेगा अपने वुडन स्केल. ओके, लैब में एक्सपेरिमेंट में. देन डियर स्टूडेंट्स, वी कनेक्ट दिस टू कॉपर प्लेट्स. तो यहाँ पे वी आर कनेक्टिंग इट टू सम कॉपर प्लेट्स. This is our copper plates. Then we keep some gap, left gap. Then we keep some gap, we call it as right gap. Okay, we call this copper plates C1, C2, C3. Left gap में we are going to keep a resistance, unknown resistance, call it as X. Right gap में we are going to keep a variable resistance called as R. In between, I'm going to have a galvanometer and a sliding contact key called as J jockey. Correct? Labeling, let us proceed. C1, C2, C3, copper plates. Okay. G means what? Galvanometer. J means sliding contact key or jockey. X, unknown resistance. This is what we are supposed to find. R, variable resistance from resistance box. Okay. E, EMF of the cell. R, internal resistance. K is your key, and D and RH is your rheostat. More than enough, dear student. इतना labeling कर दिया, nobody is going to ask us now explain this. तो हमने labeling कर दिया. Okay, now how does this work, sir? Very simple mechanism. I will take the sliding contact key, I'll switch it on. Okay, sliding contact key को मैं touch करूंगा किधर? Wire AB पे, and I'll obtain a point somewhere where I'll get this point AD. correct है? Point D जहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा? ये galvanometer is showing 0. When the galvanometer shows 0, I'll say that the network is balanced. So
working, maybe we can go ahead on working, on touching slash tapping the jockey at different points on wire AB, obtain the null point. Okay, when galvanometer shows what? 0. We say the network is balanced. And if the network is balanced, dear students, then R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. बेटा आपको R1, R2, R3, R4 के लिए आपको 4 रेजिस्टेंस चाहिए. How many resistors do you see in this diagram? Actually visible कितने हैं? 3. सर एक्चुअली हमको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं. एक है एक्स आर, बट छोटा आर को अपन इग्नोर कर देंगे. तो सर एक एक्स दिखा, एक आर दिखा, हमको यहाँ पे भी तो कोई रेजिस्टेंस चाहिए. करेक्ट, जहाँ पे अपना जॉकी टच कर रहा है. करेक्ट, बीच में Yes. गैल्वेनोमीटर. तो इस रेजिस्टेंस को डी हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंगे. तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर डीबी. नाउ यू कैन से एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू so and so. So let us proceed. Resistance in left gap upon resistance in right gap is equal to resistance of wire, है ना. और उस रेजिस्टेंस का क्या है? एडी. और यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर डीबी. बेटा हैव यू स्टडीड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th standard that R is equal to rho L by A, Yes. which means R is directly proportional to length, inversely proportional to area. Area of cross section को मैं पूरे से मैं क्या रखने वाला हूँ? कांस्टेंट रखूंगा. रो भी कांस्टेंट रहता है बिकॉज इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. तो रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप को हम लोग लिखेंगे एक्स, रेजिस्टेंस इन राइट गैप को लिखेंगे आर. इधर लिख देंगे रो एल ए डी अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो एल डी बी अपॉन ए कैंसिल, रो कैंसिल, आई एम लेफ्ट विद लेंथ ए डी अपॉन लेंथ डी बी. Dear students, if I call this length AD as, let me call this as L. तो अगर ये लेंथ L है, पूरा लेंथ तो 1 मीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 100 minus L. Understood my point? Yes. Waited, my diagram was just got erased. I think I have to redraw that one. So this will become 100 minus L. You understood ना बच्चा? Great. Yes. हाँ ठीक है, चलो ये हो जाएगा. तो I'll write x upon r is equal to L upon 100 minus L. Okay. So I can find x is equal to r into L upon 100 minus L. Beautiful. Done.